Northern Pakistan is home to three of the world's highest mountain ranges, the land of beautiful pure white snow, grand glaciers, beautiful lakes, and breathtaking landscapes. In the midst of this charming part of the world lie the two remote valleys of Immit and Yarkhun Lasht. Residents live in small villages which are scattered throughout the valley. Their lives are mainly dependent on livestock and farming. Unfortunately, everyday life is a challenge in this paradise. For years, the people of these valleys have lived in severely harsh conditions. In unforgiving weather and treacherous terrains, women had to walk for hours for a single drop of fresh, clean drinking water. Khushal Begum from Chikar Brogil is one of them who would walk for hours and make several trips a day to fetch water. Every trip would consume around 90 minutes of their time. Spaghetti, rote bisirako, dinisi mohawistam, ushipawistam. Hatu kuitare kurahno bawishi, kids biti hayagi kate ubi, udi, zapan kids kori, toriko itur hate bakyo pahana bestiawishi. Despite all the hardships they faced, the ultimate fear of returning empty-handed often became their fate. Though miles apart, people of both valleys shared the same fate. Guljahan, who belongs to Bilhan's Immit, had to face similar hardship. Scarce resources, extreme weather, and polluted water magnified their suffering. Mishburihto, bishput kishto. Botten spanogot kisako saipom tsarotsan. Dabans dorst. And that zite butter spanogot. Getting these basic necessities to the doorsteps of inhabitants of these valleys is easier said than done. To move the water against its natural flow requires not only exceptional engineering imagination, but also the highest form of human grit and perseverance to see such projects through till the end. The Ahan Agency for Habitat initiated Water and Sanitation Extension Programme that provides clean water supply to local communities at their doorsteps and helps prevent water-related diseases through training in hygiene and sanitation practices. इदारों तहार दरखास्त को सेंकी स्पा मुश्किलात तो हानि से बहुत शेरी कोरी है सो स्पा हाश मुश्किल भी शेकी. Resolving water problem was one of the major milestones, but there were other issues which were yet to be faced and fought. Earlier, people of these valleys used to burn wood and peats to cook a 3-time meal for their family. The lack of airflow and use of unprocessed biological waste in the kitchen resulted in multiple health issues. Guljahan's family was one of them. Dit scham diskshut. En dat goedjes go kakske wadart bot wit schu. En zij scholen snabas was de versuke gerazirus wit thin up snogot as ruis den bot wis den sar wis den. Inhabitants of these valleys contracted skin diseases, eye infection, digestive and respiratory disorders due to smoke and contaminated water. Since 2016, the Building and Construction Improvement Programme, another key initiative of the Ahan Agency for Habitat, has provided many eco-friendly solutions that cater to the needs of the people by mitigating health risks as well as taking off the financial load that has built up from the buying of wood for cooking and heating. कम से कम 100 मन खर्चा आता था पहले,
2-3 महीने का 100 मन 200 मन, अभी 50 मन खर्चा आता है, फ़ायदा उससे ज़्यादा लेता है हम। Antat nivsaka raishatr kulishtindra tayup dabar. AKDN has always strived to improve the general well-being of people and find solutions to local challenges. One of them was basic and maternal health care. Dispensaries in the locality were unable to effectively deal with maternal and infant mortalities, and home deliveries would pose higher risk to the child and the mother. With insufficient expertise, efficiency, or the equipment to diagnose prenatal complications on time, women were often referred to nearby villages, which sadly they could not reach on time due to poor infrastructure and long travelling hours. Witnessing the sufferings of the people in her community, Nafas Bibi from Shuist decided to become the first lady health visitor from her village. हर साल में तकरीबन 2-3 मैटरनिटी डेथ होती थी और इन्फेंट डेथ तो बहुत ज़्यादा ही होते थे। और जब यह डिलीवरी नहीं होती थी तो हम इसको आगे बुनी भेजते थे, क्योंकि इधर से शूज़ से बुनी में तकरीबन 10-11 घंटे का रास्ता है। तो या वो इसकी डेथ होती थी या वो पहुँचते पहुँचते इन्फेंट डेथ या मैटरनिटी डेथ होते थे। Losing a loved one is irreversible, but preventive steps can be taken to mitigate further risks in the future. From mother-child healthcare to general medical checkups, awareness campaigns to training lady health visitors, efforts by the AKDN agencies have made inroads to improve outcomes. Social and Economic Development Programme in the remote valleys have made an impact by providing logistical and financial support for an array of medical procedures. Access Camp is an initiative of Arhan Health Services and Arhan Health Board for Pakistan, the purpose of which is to provide basic health facilities to people living in the far-flung areas. Ataullah from Gohkir is one of their health workers who offers services in his region all the way to Brogil, which is the last valley of Upper Chitral. जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास जन आते हैं, उनको लेके हम 2-3 जगह में फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, और मैं भी खुद भी हर महीने में 2-3 दफ़ा फ्री हर घराने को जाता हूँ और कैंप करके वापस आता हूँ। The camps ensure checkups, screening and vaccination of every individual. Apart from this, every year, LHVs and health workers are given a general refresher course, who then visit families and dispense necessary information for the betterment of people. अब जब वो डिलीवरी के लिए प्रोग्राम से पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं तो हमारे पास सारे इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको सही ट्रीट कर सकते हैं, दवाइयाँ हमारे पास है, हम उन एडमिट करने के लिए हमारे पास हीटिंग का बंदोबस्त है, हम उनको 3 दिन एडमिट करते हैं, उनको एंटीबायोटिक देते हैं और भेजते हैं घर पे, हम रेफर करने की ज़रूरत नहीं होती जब बुरा से कोई आते हैं तो। AKDN and the Ismaili Council for Pakistan have been working towards a healthy future in these far-flung valleys, taking small steps and tackling bigger challenges in the health sector, one step at a time. जुलाई को जब सैलाब आया था, तकरीबन 5 बजे, गर्मी के टाइम में तकरीबन दिन का टाइम थे।
हम तो बड़े हैं, हमें तो एहसास भी होता है, मगर हमारे छोटे बच्चों को भी एहसास होता है कि अब ये घर हमारे ऊपर गिर जाएगा। तो इसलिए सब जो है यहाँ से उधर महफूज ये पहाड़ के दामन में जाके तकरीबन 12-13 दिन वहाँ मतलब खुले आसमान तले जो है बैठ के वहाँ मतलब अपना जान बचाया। बाकी तो हमने कुछ भी ना बचा सका। 6 घंटे के अंदर यहाँ पे जब बस वक्त ग्लेशियर टूटने की वजह से दरिया करम्बर को जब बंद किया, यहाँ पे उसी वक्त ही 26 घराने डूब गए। उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनके पास पहनने के अलावा कुछ भी नहीं रह गई। उस वक़्त मैं एज ए स्टेप कोऑर्डिनेटर यहाँ पे कैंप चल रहा था इतना पाकिस्तान की जानिब से। ऊपर से कोई वॉलंटियर आ गया दौड़ते हुए, तो उसने आके कहा कि सलाब आ गई, जल्दी निकल जाओ। काफ़ी मुश्किल ये हुआ कि अभी हमारे साथ बच्चियाँ थे, कुछ तो बेहोश होकर गिर गए। तो कुछ को हमने कहा कि आप ऐसे करो, दीवारें फलांग के नीचे आप भाग जाए। कुछ के टांगों में फ्रैक्चर हो गए। फिर ये प्रोटेक्टिव वाल जो है सर, अगर ये नहीं होता तो शायद वो इतना ज़्यादा आया था कि वो सीधे जमात खाने में आता। In response to areas where climate change has left a devastating impact, as well as areas that are exposed to imminent natural calamities, the Al-Khan Agency for Habitat has endeavored to mitigate risks faced by these vulnerable communities in various ways. Through the construction of flood protection walls for areas at risk and the provision of shelter homes to those affected by disasters, AKAH is enabling communities to look towards their future with renewed confidence. However, those who have been affected by natural calamities do not have a choice but to start again. Economic stability is their immediate challenge. Sirajuddin is one of many flood-stricken people who lost all of his valuables. To support his family, he had to travel to another city distant from his loved ones. जगह छोड़ के इस्लामाबाद जाते थे, मजदूरी करते थे। 7 या 8 महीने में घर से बाहर रहता था। इस दौरान घर में जो काम करने होते उसके लिए सोचना, फिर वहाँ मजदूरी करके पैसे कमाना, घर बेचना, इस तरह बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। Social and Economic Development Programme, a council intervention that works alongside AKDN, is empowering families by enhancing their earning capacity through skill development, vocational trainings, and technical skills. अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ये SEDP की ताउन से कारपेंटरी का ट्रेनिंग मुझे दिया गया। घर पे अपना काम कर सकता हूँ, शाम को अपने घर पे आ जाता हूँ। बच्चों की देखभाल होती है, उनकी फ़ीस वगैरह। SEDP जब से हमारे इलाके में आई हुई है, गरीबों के साथ ताउन कर रहे हैं। Another extension of SEDP is generating self-employment opportunities by offering micro-enterprise solutions. One of its beneficiaries is Azim Khan from Mujawir. تلميذ دخونته سباسم بس دخون تيومز دي تايم بوس الموبايل دي تايم بوس رانا نتزالت كمزور بيت نخو خاص ما رأي چیز نخزال ما سي چیزیات نگه دخون بیر کارم تو 24 घंटा में ده جنم تو وزي دي تايم بوس بود تولات را کمزور تکاز تايم بوس نواز چیز تنشن بیماریش بیداوی تشتش
The Kumbaran Bus Council ne 2017 imari pisaretu. Dan majo warang zgaro diem date solpit. Majma wazam date lagat takriban. 12 घंटे डिप्टी दी मैम जिद कौन बांध ने वरस सामने मुझे कौन वो डेट लग मैं उसकी पूछता रखो मजीद स्पॉट मार ने खटनी है ज़ख़ून ज़ोलत हम ते की बत ने पेशोनी ने टेंशन ने चीज़ सोच कदी है दूसरे हम ते की ज़ख़ून लतम की उस ज़ावस क्लास फीस बरांडे काम खर्चा ज़ख़ून स्पॉट सारा ज़ख़ून लत बेहतरीन तब्दील के जाए जिन्हें पैगाम की उस अवरे मिसाल के मास्टर मिस द जीवन मुल्क दुनिया आज की बस जिन्हें अवरे पैगाम ते की वज़न the دوران كومي دورا كذي دان تاون لتر الديور الثانية أشي ديور غريبة بتشيز ديركو SEDP ने अब तक 2 सालों के अंदर 62 इंडिविजुअल को डिफरेंट ट्रेड में स्किल्स उनको सिखाए हैं अब वो लोग बेहतर तरीके से अपने माशी हालात बेहतर कर चुके हैं अपने लाइवलीहुड इम्प्रूव कर चुके हैं और वो वैली के अंदर एज ए स्किल्ड पर्सन के तौर पर वैली के अंदर भी काम करे और वैली से बाहर भी जाके काम करे. Helping to establish and run sustainable business models for high mountainous regions is a key area of focus for the Yarkhun Rural Support Programme. AKRSP has helped small entrepreneurs in setting up environmental friendly businesses, cold storages which help in storing good quality seeds for improved production, and greenhouses. AKRSP has built greenhouses for people like Ashraf Khan and many others who are reaping benefits and prospering. ये था कि इससे पहले इस तरह की सब्जी हमें यहाँ पर नहीं मिलती थी. इस टाइम तो बिल्कुल डिमांड ही पूरा नहीं होता क्योंकि लोगों का अभी मैं 20 किलो अगर बेचता हूँ तो फिर डिमांड आ जाता है कि 20 किलो हमारे तरफ भेज दो, तो बहुत शौक से लोग ले जाते हैं. पहले यही कि अपने घर के अखराजात ही पूरा करते थे, बच्चों के फीस, तो साथ इसकी सपोर्ट मुझे तकरीबन जो ना मेरा उसके साथ इनकम के साथ 25 से 30% इजाफा हो गया. As businesses grow, more resources are required to keep these facilities functioning. However, transporting the products to places was a challenge. Even for work and educational purposes, locals often had to travel to nearby villages, but the traveling hours would be long and taxing on people due to weak bridges and improper passages. Community member Wali Khan observed his people facing these issues. Hence, as a responsible community member, he sought AKDN's support. यहाँ बहुत बारीक पुल था, उस पर चलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था. ख़ासकर ये शेखुर्दुनी लाना भी मुश्किल था. कोई बीमार हो जाता था तो उसको भी लेके शहरों में जाना या अस्पताल तक ले जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था. बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो उनके लिए आना जाना मुश्किल होता था. मुख्तसरन बात ये कि जब तक ये पुल नहीं बना था हम दूसरे इलाकों से कटे रहते थे. AKRSP has aided in building infrastructure to support business growth by building bridges for transportation. 5 दिन हम जिस रोड पे सफ़र करे थे वो एक दिन में हम करते हैं. जो कुछ हमारी ज़रूरियात AKRSP ने बनाया और आगे भी हम मज़ीद भी AKRSP से और AKDN के तमाम इदारों से तवक्कुआत रखते हैं. To fulfill the expectations of people, AKDN agencies realized that the shortage of water supply would negatively impact the growth of trees and crops, which would expose life to unwanted threats, resulting in sparse population. Not only that, but frequent power outages hindered day-to-day work, burdening locals with unnecessary expenditures, as electricity, being a basic amenity, was not available in this region. AKRSP assisted in developing the irrigation channel in Borth. Musa Khan, who is the community head of Yazban, was commissioned by AKRSP for constructing it.
أو بعدين كم جدا كرسبيسا كرفان كده ساكن سكام آبادی كم موظف خد هم جدا جنگلات است آباد وید زمینش وید درخت پرندن دینش کتایش دارن سومی که برشان در برش فایده سکر وید جتاتش که ایمامی داره وید. Setting up water channels not only fixed the irrigation problem, but it also helped in power houses for electricity generation. Javed Iqbal, a resident of Porth, was appointed as its project head. जिस तरह सेंट्रल इशकोमा से हमें बिजली दे रहे थे, इसमें हमें हफ्ते 10 दिन में भी बिजली बंद होते थे, जिसकी वजह से हमारे चक्की पिसाई, चराई और बहुत सारे काम बंद होते थे। इस वक्त तो इससे 850 घराने फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसमें बिलहस तिशनालोड मुजावर शमसाबाद बहुत दूर एरिया। अभी तो ये बड़ी बिजली आ गई है, इंटरनेट चलती है हमारी इधर, मोबाइल चार्ज पे लगाते, टीवी देखते। A key intervention to help the marginalised communities in the remote valleys has been the support of distressed cases with multiple vulnerabilities. Shagufta Rani's family from Bar Jungle is one of these distressed cases where a 17-year-old is single-handedly taking care of her family and performing everyday chores. जो 3 घर में है इनके साथ मिर्गी के शिकार है, मम्मी के साथ भी है और बाजी के साथ भी है और एक भाई है उसके साथ भी है। और हमारे वालिद बहुत ज़्यादा बूढ़ा है और वो न तो सुन सकता है और न कुछ कर सकता है। फिर घर में ऐसा ही माहौल भी नहीं है, फिर इधर पढ़ने के टाइम पे भी झगड़े करते हैं घर में, बात नहीं सुनते घर वाले, थोड़ा अपसेट है। सारे काम भाई घर के जो भी काम, जो माल है भाई उनको चलाना, घर में क्या करना है सब कुछ भाई, क्या देना है, खर्चा कितना होता है, खेत में जाके किस टाइम काम करना है और किस टाइम घर आना है, भाई वालों को स्कूल भेजना, मम्मी वालों के कपड़ों को धोना, कब धोना, क्या करना, इनके लिए दवाई खिलाना, सब मेरे ऊपर है भाई जी। मैं उस टाइम में हुंजा में पढ़ रही थी और मैं घर में नहीं थी, उस टाइम मम्मी चाय बना रही थी, उस टाइम इसके ऊपर चाय गिर रही है। उधर फिर बाजी भी कुछ पका रही थी मेरे ख्याल में, उधर जल गई भाई। मेरे बड़े भाई हुंजा में पढ़ रही थी, उसकी उम्र 20 साल थी भाई, उसके साथ भी यही मिर्गी की बीमारी थी भाई, उसकी वजह से वो पानी में गिर के उसकी डेथ हो गई थी भाई। अभी मेरे घर आंचल है वो भी थोड़ा सा गुजारा है, बहुत बारिश हो गया तो ऊपर से बारिश आके लीक करते हैं अंदर। मैं बड़ा होके फिर डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद मैं पहले अपने घर वालों को संभाला करूंगा, दूसरा अपने के लिए अच्छा मकान बना के उधर आराम और सुकून से बैठने के लिए आइडिया करूंगा। Many children think like Farman Ali and dream of a prosperous future, where education illuminates the path for those stricken by darkness. There are those who, despite the opportunities provided, remain in despair. Bibi Noor from Shoist has been witnessing times when convincing parents to send their children to school was a difficult task. बच्चों को दाखिला करना वालिदैन के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया, यहाँ मतलब पैसे कमाना लोगों के लिए मुश्किल होता था, इसलिए बच्चों को घर में बिठाते थे। बच्चे जब 5वीं क्लास पास करते थे तो उनको बस बकरियों के पीछे बेचते थे, वो मज़ीद उनको तालीम देने का ख्वाहिशमंद नहीं थे वालिदैन। पहले ऐसा होता था, हम घर घर जाकर मेहनत समझत करके बच्चों को यहाँ लाते थे। Fortunately, the children started coming to school. The next challenge was to make parents understand the importance of early childhood development, or ECD, which has been emphasized by His Highness Prince Karim Aga Khan as a key priority. Ms. Parveen Jamil, an ECD teacher from Immit, shares the issues faced from reluctant parents. शुरू में हमारे लिए पेरेंट्स को मोटिवेट करने में बहुत ज़्यादा मसला हुआ हमारे लिए। जैसे हमारा पुराना ट्रेडिशनल तरीका था,
AB लिखना, उनसे डांट करवा के उनसे ABC लिखवाना, याद करवाना, रेटिफिकेशन के ज़रिए हम उनसे करवाते थे, या तो कोई एक्टिविटी बेस। हम शुरू से इसी तरह का अवेयरनेस नहीं था पेरेंट्स को। 2 घंटे के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ भी जाके ये खाने के उसमें जाते थे। हम बच्चों को इतना फ़ीस दे के स्कूल भेजते हैं तो टीचर उनको लेके बाहर खेलते हैं, तो इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा शुरू में कंप्लेन आ गए। Sir Sultan Muhammad Shah Aga Khan III has said, "Our social customs, our daily work, our constant efforts must be turned up, must be brought into line with the highest form of possible civilization." At its greatest period, Islam was at the head of science, was at the head of knowledge, and was in the advanced line of political, philosophical, and literary thought. Extending a hand of selfless help, a hand of love, a hand of hope will allow us together to successfully face any challenges faced by our brothers and sisters around the world and help to bring betterment into their lives. तालीम जब तक होगा, अवेयरनेस लोगों में होगा और तरक्की बहुत जल्द होगी, और तरक्की का एक बहुत बड़ा मंजिल तालीम ही के ज़रिए से तय किया जाएगा। अब हमारे पास माशाल्लाह से जो बच्चे हैं और पेरेंट्स से वो फुल अवेयर हो गए हैं हर चीज़ के बारे में। इवन जब क्लासरूम में आते हैं तो चीज़ों को देखते हैं, अपने बच्चे के प्रोग्रेस के हवाले से देखते हैं। इवन हमारा जो क्लास वर्क होता है या उनके पोर्टफोलियोस होते हैं या हमारे डेली मंथली जो मीटिंग होता है उसमें पेरेंट्स आते हैं और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए हैं। अब इतना मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। Observing a shift in families' attitude towards education, the Bridge Programme, an initiative of the Aga Khan Education Board for Pakistan in partnership with AKESP, was implemented to provide educational assistance to students with potential. Zubaida Sher was among the students who were brought to Karachi for further education. इमिट में मैं गवर्नमेंट साइंस स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ पे मेरी इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इनमें मुझे कमज़ोरी महसूस होती थी, और यहाँ आके वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। हमारे बीच प्रोग्राम के पहले बैच में 7 स्टूडेंट ने, उनमें से 8 स्टूडेंट ने हाई सेकेंडरी स्कूल के मुख्तलिफ स्कूल में एडमिशन क्वालिफाई किया और 4 स्टूडेंट ने प्रिंस अली बॉय एकेडमी कराची और मोहम्मदी गर्ल्स एकेडमी कराची में 2 बच्चों और 2 बच्चियों ने एडमिशन क्वालिफाई कर लिया। A model of hope centered on education and social responsibility has transformed many other areas of the region. Access to education helps not only to identify opportunities but also in creating them, and opportunities inspire hope. Sultan Muhammad, the principal of Aga Khan School Immit, kindled this fire of hope inside him and persisted to improve the education system of his valley. आगा खान एजुकेशन सर्विस जो है ना, इसके 3 मकासद के लिए पहले से काम करता था। एक तो सबसे पहले जो था ना एक्सेस था, कि जहाँ जहाँ भी कोई स्कूल हमारा नहीं है, जहाँ गवर्नमेंट की भी रसाई हासिल नहीं है, वहाँ तक रसाई हासिल करना पहला AKSP का काम ये था। दूसरा जो स्टेप था वो सस्टेनेबिलिटी, एक जॉइंट वेंचर बनाकर AKSP और कम्युनिटी मिलकर जो ना अदारों को चला सके। थर्ड जो ना वो है क्वालिटी। ज़्यादातर फोकस जो ना वो टीचर ट्रेनिंग पे हुई। ये हिज़ हाइनेस का भी फरमान है कि जो ना कि थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन जो ना अदारे पर मेरे हर एक जो ना मेरे मुरीद से मुझे आना चाहिए। तो हमें मुसीबतों से नहीं घबराना है, चैलेंजेस से नहीं घबराना है, बल्कि मेहनत करके ना वहाँ तक पहुँचना है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। Only continuous collaboration can bring a positive impact in the quality of life of people, and together we hope to build a better tomorrow.